Assalamu alaikum. We are going to revise NAPLEX CPR. So our first series about CVS, which I have divided into episodes. So it is approx 5 episodes we will cover. And today is our first episode, which is about hypertension. So let's get started. Assalamu alaikum. So this is our last lesson on hypertension. So let's get started. Key drugs increase blood pressure. So let's talk about key drugs that can increase blood pressure. It's amphetamines, cocaine, pseudoephedrine, opioid, immunosuppressant, 1, NSAIDs, systemic steroids, SNRIs. These are the antipsychotic drug, ETOH, anesthetic, appetite suppressant like phentermine, caffeine, some herbals, oral contraceptives, and mirror background, and last, some cancer drugs also increase BP, blood pressure. Let's key points to be remembered. Talk about overall, it's a combined slides. Diuretic dose number लेटर देन 4 PM. आपने जो डोज है वो 4 बजे से पहले लेनी है. I have mentioned earlier also at this point, get up slowly, dizziness. Supplement potassium ion, not in potassium sparing drugs. Allopurinol is CYP3A4 की through metabolism होती है, तो you should avoid grapefruits. Okay, ACE inhibitors, herbs and aliskiren. Don't take these three combination. Birth defect, hyperkalemia. ACE inhibitor has most angioedema. ACE inhibitor cause cough, slowly CKD progression, help with cardiac remodeling. Used together is in diabetes, should avoid if GFR 60 से above हो. Okay. Do not use with Entresto. Okay. Beta blockers take some time, QD, और मोस्टली जो है वो QD है, सेम टाइम QD. ओके, अगर आप सेम टाइम मीन अगर आप दिन में 7 बजे ले रहे हो तो आपने दूसरी डोज भी 7 बजे लेनी है, अगर 8 बजे तो 8 बजे, ऐसे नहीं कि दिन में कभी भी ले रहे हैं. डिजीनेस, फटीग, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इन्हांस और मास्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, और इसके अलावा में एक और चीज़ बढ़ती हुआ है हाइपोथायरॉइडिज्म. नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, केयरफुल विथ ब्रीथिंग डिफिकल्टी. Correct, take with food. Captopril and metoprolol take with food, also take with food. First line post MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर. ओके, फर्स्ट लाइन है किसमें? हार्ट डिजीज के अंदर, हार्ट फेलियर के अंदर, पोस्ट MI के अंदर. नो लॉन्गर प्रिफर्ड फॉर हाइपरटेंशन के लिए अब ज़्यादातर बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज़ की जाती. इट वॉज प्रीवियस रेजिम थी. Acebutolol, pindolol and penbutolol have ISA activity, do not use with post MI. ओके, सो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद आपने यूज़ नहीं करना. ISA ऐसी एक्टिविटी है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देते हैं. तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रहा होता है और एरिया के ऊपर, तो वो इसलिए आपने इस ड्रग को अवॉइड करना है. एस्मिनोलॉल, लेबुटोलॉल, लो प्रेशर, यूज फॉर हाइपरटेंशन क्राइसिस. use a beta blocker, caution with other drugs that decrease heart rate. So known DHP, CCB जो के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसको अवॉइड करना है, उनके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेना. Let's talk about calcium channel blockers. Swelling of ankle, irregular heartbeat, avoid grapefruits. Adelaide यानी मीटर कौन सी है? मिथाइल 2 जो प्रेगनेंसी में ली जाती है. टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, में लीव गोज टैबलेट. DSP calcium channel blocker, pine. Okay, amlodipine plus phalodipine are safest. CCB must be used in patient with heart failure and reduce ejection fraction. Known DSP calcium channel blocker mainly used in arrhythmias. So you must need to be remember this very important one कि CCB आपने heart failure के में use करने हैं और जिन patient का
इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है उनमें यूज़ करने हैं, और जो DHP नोन है वो एरिथमियाज में यूज़ करने हैं। जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो सिर्फ 3A4 के थ्रू स्क्रीट आउट होते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ग्रेप फ्रूट नहीं लेना है। क्लोनिडिपिन डू नॉट स्टॉप अब्रप्टली, नहीं स्टॉप करनी है, आपने टेपर करना है। पैच चेंज वीकली, अप्लाई टू हेयरलेस, अपर आर्म और चेस्ट, अप्लाई टू डिफरेंट एरिया ईच टाइम, डू नॉट अप्लाई ब्रोकन स्किन एंड रिमूव फॉर MRI। ओके, MRI के वक्त आपने रिमूव कर देना है। हेयरलेस एरिया आर्म के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, डिफरेंट एरियाज के ऊपर अप्लाई करना है हर टाइम, मतलब आपने उसी एरिया को भी डैमेज नहीं करते रहना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग इन मार्केट अवेलेबल की कॉम्बिनेशन ड्रग्स। Losartan most available with hydrochlorothiazide by the name of Hyzar. Omlosartan also available with hydrochlorothiazide. The combination of available hydrochlorothiazide I am talking about Benicar hydrochlorothiazide, Valsartan hydrochlorothiazide, Daiwan hydrochlorothiazide, brand name है Lisinopril, और SCT, I will pronounce it SCT, also available with Destorex के नाम से, Benazepril SCT अवेलेबल है Lutencil SCT के नाम से, Abracertan SCT अवेलेबल है Avalid, Enalapril SCT अवेलेबल है Vasertic, Omlosartan और एम्लोडिपिन अवेलेबल है एजोर के नाम से, क्यूनाप्रिल SCT अवेलेबल है एक्यूरिक और क्यूनेरेटिक के नाम से, बेनाजिप्रिल एम्लोडिपिन अवेलेबल है लॉट्रिल, एजोसर्टान और क्लोरथाजिडीन अवेलेबल है इडार बाइसर्कुलर, वेल्सानर एम्लोडिपिन अवेलेबल है एक्सपोज, टेलमिसर्टान एम्लोडिपिन टिंस्टा, बेरेंडिपिल एम्लोडिपिन ब्रेस्टेलिया, ट्रेंडोप्रिल एंड वेरापामिल, टेरका, एलिस्किन एसिडी, टेक्ट्रोना एसिडी, क्लोनिडीन, क्लोरथाइजाइड अवेलेबल है क्लोरप्रेस, मिथाइल डोपा एसिडी अवेलेबल है, टिनालॉल, क्लोरथाइलिडोन, टिनोटैटिक, बिजोप्रोलॉल और एसिडी अवेलेबल है, जेएक, मेट्रोपोलॉल टेट्रेट और सक्सीन, दोनों अलग अलग सॉल्ट है, रिमेंबर दिस। टेट्रेट एसिडी लो प्रेशर एसिडी के साथ और सक्सीन डोट्रोप्रोल के साथ, नेडोलोल और प्लस कॉम्बिनेशन है बेंड्रोफ्लूमीथाजाइड कोरजाइड के साथ, नेबिवलोल, वेल्सर्टन, बायोवेल्सर्टन, ट्राइमट्रीन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, मैक्सिसाइड, डायजाइड, स्पाइरोलैक्टोन और एसिडी अवेलेबल है, एल्डेक्टाजाइड, ऑलवेलसर्टन, एम्लोडो एसिडी ट्राइबेंजोल, वेल्सर्टन, एम्लोडो और 3 कॉम्बिनेशन है एसिडी एक्सपोर्ज, एसिडी जेड. So I have mentioned all the brand names which are available internationally. That's all for hypertension. Thank you guys for watching my videos. It is really appreciable if you mention your thoughts and comment about my videos. These are knowledgeable to you or helpful for you. So I should continue to making these videos. Thank you for please subscribe my channel and do mention in comments. Allah Hafiz.